Welcome, folks. Sat Sri Akal, Namaskar, Vanakkam. The Supreme Court really dressed down the UP government, right? Not only did it cast aspersions on the quality of the investigation, not only did it cast aspersions on it, clearly said that they were trying to protect the guilty. They even wanted this process to be investigated by a judge, but the judge outside of the purview of the UP. I mean, from a judicial system outside UP. What kind of dressing down? And this, according to me, folks, and according to the papers, according to our Prime Minister, according to our Home Minister, is the best state in the country, the best managed state in the country. Well, what do we have here? Unhappy with Khedi probe, Supreme Court wants retired judge to monitor it. And this judge has to be from outside UP. Wish to infuse impartiality and independence. SC frowns on states refusing CBI probe. Accused in Lakhimpur case being favored, says Supreme Court. Seeking a better probe. Government presents new evidence, clinching evidence of Mishra's presence. Oh man, top court suggests monitoring of probe by former High Court judge, seeks UP's response by Friday. Tests say shots fired from guns of Khedi accused SIT member. A rifle, a revolver, and a repeater gun. Amazing, isn't it, right? Forensic analysis says rifle seized from MOS Mishra's son was fired. Hey, then that's kind of a leap of faith to suggest that the third party fired it. I mean, the obvious thing would be that he fired it, right? Akhilesh on the warpath. Akhilesh warns of protests over missing names in UP voters list. Now, this is a shameful exercise if it's being carried out. Election Commission, as we've always known in the past 7, 8, 10 years, has been compromised by this the central government, by the BJP. So let's hope we can get it cleaned up. UP polls coming, PM set to unveil projects worth rupees 1 lakh crore. Do you remember that video when he went to Bihar, when he said 90,000 crore, 1 lakh crore, as if he was, it's our money, as he's going to print it for free in the printing press in Maharashtra. I mean, this is the kind of chicanery we see, right? Nada has a really good one. Workers of other parties loyal to individuals, BJP cadres to ideology, says Nada. How does he say that when he has all the turncoats on Congress joining them, right? How can they be loyal to anything? Congress people generally are loyal only to their seats, right? And money. Chauhan tests waters with image makeover. What kind of image makeover does Chauhan need? He's been running rabid. He was running with the hunting with the hare, running with the hound. He's been trying to get bigger Hindutva than anybody else. But Mishra is on his trail, right? But how do you change the image when 15-year-old gang raped in MP, 3 arrested? MP school run by church writes to police over VHP Bajrang Dal threat. Now, how do you juxtapose this against the hugging and kissing of BJP, of Prime Minister Modi, of the Pope, right? This is the reality, really. Congress to center, why ban on company linked to Augusta Westland deal lifted? Right, really funny, right? Raat gayi, baat gayi, they can't use Augusta Westland to nail Sonia or Rahul Gandhi, so they've fucking given up on it, right? And they know that it's been a kind of disastrous, they probably need these Italian companies to now line their coffers. Slugfest after report alleges trace of Rafael deal payoff. Barbs fly between opposition government in fresh Rafael row. So a couple of things are going to keep popping up before the 2024 election. And the opposition needn't worry. They're just going to nail them, right? Farmers are always going to be there. Rafael is going to keep coming up. NSO is going to keep coming up, and Facebook is going to keep coming up. And this is like 3 staff memos flagged polarizing content, hate speech in India, but Facebook said not a problem, but it will become a problem. Like I said, farmers keep coming back. Farmers plan fresh protests near house. SKM says that starting November 29, 500 farmers will move to the parliament every day to assert their rights to protest. And here's the big worry, right? Why the farmers are also worried. Newly harvested crops selling below MSP despite price rises. So here's the reality, folks. So you got to listen to the farmer. There needs a whole bunch of changes in agriculture, but you got to do it with everybody on board. नमस्कार दोस्तों, यूं तो बीते 1 महीने के दौरान लखीमपुर हिंसा की हर सुनवाई के मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लताड़ लगाई है, यूपी की एसआईटी को फटकार लगाई है। जिस ढंग से यूपी पुलिस, यूपी की एसआईटी गवाहों के बयान दर्ज करने में ढीला ढाला रवैया दिखा रही है, सबूत जुटाने में लापरवाही दिखा रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे मोनू मिश्रा को बचाने की नाकाम कोशिश कर रही है। उन कोशिशों को लेकर, उन तरीकों को लेकर, उस रवैये को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 5 सुनवाई के दौरान
जमकर फटकार लगाई। लेकिन आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो एक तरह से यूपी सरकार का मुंह काला होने की तरह है। यूपी सरकार के गाल पर न सिर्फ तमाचा है बल्कि यूपी सरकार के मंसूबों को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से बेनकाब भी किया है और साफ साफ यह भी कहा है कि आपकी जांच पर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों? और अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज यह कह दिया कि आपकी न्यायिक जांच पर भी हमें भरोसा नहीं है, आप दूसरे राज्यों के रिटायर्ड जजों के हवाले जांच करिए, आपकी एसआईटी जिस ढंग से जांच कर रही है वो तरीका सही नहीं है, जिस ढंग से गवाहों के बयान दर्ज करने में जो रवैया अख्तियार किया जा रहा है, 3 एफआईआर को मिलाकर इंटरलिंक करके जिस ढंग से एसआईटी जांच कर रही है, ये सब संदिग्ध है और ऐसा लगता है किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ ये कहना, और सबसे बड़ी बात, यूपी सरकार की तरफ से न्यायिक जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक पूर्व जज को जो जिम्मेदारी दी गई थी, उस जिम्मेदारी के बाद सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि आपकी न्यायिक जांच पर भी हमें भरोसा नहीं है, आपके जुडिशियल कमीशन पर या कमेटी पर हमें भरोसा नहीं है, तो क्या कहेंगे आप? और इसके बाद अब यह माना जाए कि यूपी सरकार दूसरे राज्य के जजों के हवाले जांच करेगी, न्यायिक जांच अब यूपी के रिटायर्ड जज की बजाय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज करेंगे। कम से कम सुप्रीम कोर्ट की मंशा तो साफ आज यही दिखी। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट? ये बताने से पहले आपको यह भी बता दूं कि कई ऐसे गवाह जो उस वक्त लखीमपुर खीरी हिंसा के वक्त, थार से कुचले जाने के वक्त, गाड़ियों से रौंदे जाने के वक्त उस मौके पर थे, उनका बयान कल दर्ज किया गया। कुछ लोगों का बयान सुप्रीम कोर्ट की पिछली तारीख से एक दिन पहले दर्ज किया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हर तारीख पर यही फटकार लगा रहा है कि बयान दर्ज करने में आप ढिलाई क्यों कर रहे हैं? हजारों लोग थे वहां, 23 क्यों मिले? 44 चश्मदीद थे तो 4 क्यों मिले? उनमें से कुछ गवाहों से मैंने फिर बात की है। 3 ऐसे गवाह जो घायल हुए, जिनका हाथ पांव फ्रैक्चर रहा, कई दिन अस्पताल में रहे। पुलिस उनके पास कल पहुंची थी, यूपी पुलिस कल इसलिए पहुंची थी क्योंकि आज फिर सुनवाई थी और यूपी पुलिस को, एसआईटी को यूपी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना था। उन तीनों ने पुलिस को क्या कहा यह बताने से पहले फिर वापस लौटते हैं सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल आज क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने, आप स्क्रीन पर बार एंड बेंच एक लीगल वेबसाइट है, उसकी हेडलाइन आप देख पा रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट सेज नो कॉन्फिडेंस इन यूपी जुडिशियल कमीशन, प्रोब शुड बी मॉनिटर्ड बाय जज फ्रॉम डिफरेंट स्टेट। दूसरे राज्यों के जज इस जांच को मॉनिटर करें। हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, भरोसा नहीं है यूपी की जुडिशियल कमीशन पर। So the tussle to break up the government in Maharashtra continues after Sushant Rajput and after Shah Rukh's son. Now we have Fadnavis, Malik trade barbs over links to underworld. And this is why it's important, as why Girish Kumar writes, game on in Maharashtra. He says, the BJP received an unbearable jolt with the Shiv Sena after the Maharashtra State Assembly polls in November 2019, refused to sign on the dotted line and did the unthinkable by joining with the NCP and Congress. Since then, the three-party Maharashtra government has been perennially in a firefighting mode. It's understandable that an upset BJP would try to dislodge the Uddhav Thackeray-led ministry. What is, however, difficult to accept is the means for the purpose. One has to be super naive to believe that the actions unleashed by the various central agencies have no politics to them. Okay. He says these absurd political developments beg the question, why is the BJP so desperate to dislodge the Sena NCP Congress government? One is obviously because Maharashtra and Mumbai especially are like a printing press for money, right, and contributions. The answer lies in the 2024 general elections and BJP's inability in making inroads in some big states. After Maharashtra, the BJP failed to cobble a winning alliance in Tamil Nadu and failed miserably in West Bengal. After UP, it is Maharashtra with 48 seats that sends the largest contingent of MPs. If things go wrong for the BJP and UP in 2024, Maharashtra will become crucial. The NDA, which included the BJP and Sena, won 41 seats in 2019, of which 23 belonged to the BJP. Now the situation is evenly poised with the combined strength of Sena, NCP, Congress matching that of the BJP. If this three-party government survives till the next parliamentary elections, the BJP will have a tough battle ahead. Hence the attempt to pull down the Maharashtra Vikas Angawadi government, right? Interesting thing that you must notice, Jawan sharing classified info with ISI arrested, and there have been a number of cases including from the Navy, and guess, none of them
seem to belong to the minority community. Then we have this Madras High Court CJ who slammed EC, shifted to Meghalaya Court, right? That's what you do. 5,500 more troops being sent to JNK in wake of attacks. So things are hardly hunky-dory in Jammu and Kashmir, despite what the Home Minister went and said, folks. Cheers. जो श्रवण जी का कंसर्न है वो मेरे ख्याल से आपका भी है, अशोक जी का भी है और मेरा भी है। कभी कभी जब सोचते हैं तो झुरझुरी डर के मारे होती है कि ये जिस तरह का है, जिस तरह का नेतृत्व है, ये हार लेके सत्ता छोड़ दे डेमोक्रेटिक तरीके से, वो हर वो चीज करेगा जिससे कि वो सत्ता न छोड़ने पाए, जिसमें कि संविधान की ऐसी तैसी करना भी शामिल है। क्योंकि मुझे अभी भी भरोसा नहीं है ये आसानी से सत्ता से हट जाएंगे। जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, चुनाव लड़े, ईमानदारी से लड़े और उसके बाद जब नंबर नहीं आए तो हट गए, इसकी संभावना मुझे बहुत कम लग रही है। उसकी वजह है उनका डर, क्योंकि जो दूसरा आएगा वो बहुत कुछ इसके बाद वो करेगा, इंक्वायरीज बैठेंगी, तो इसलिए मुझे बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि वो बहुत खतरनाक स्थिति होगी। लेकिन खैर, बड़े बड़े बादशाह भी नहीं रहे हैं और बहुत बड़े निरंकुश लोग भी खत्म हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये इनविंसिबल हो जाएंगे, क्योंकि तब आक्रोश बढ़ेगा। जब अंग्रेजों को हटा दिया जनता ने तो कोई ऐसा नहीं है। अब जब यूपी पे आते हैं तो देखिए इशू ये है कि विपक्ष या जो एक तो मीडिया जो बिकी हुई है, आपने देखा होगा पिछले 2 महीने से सैकड़ों करोड़ों रुपए के एडवर्टीजमेंट, 3-3 पेज, फ्रंट पेज एडवर्टीजमेंट, बैक पेज एडवर्टीजमेंट किस तरह से टेलीविजन चैनल्स और इनको दिए जा रहे हैं, अखबारों को दिए जा रहे हैं, ये बताने के लिए कि यूपी तो साहब राम मतलब अजब हो गया है, ये स्विट्जरलैंड का बाप है। ये बताने के लिए सेलेक्टेड फिगर्स लिए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है। टीवी चैनल्स की भी यही हाल है। ये तो कहिए कि सोशल मीडिया चूंकि कॉस्ट इफेक्टिव है, जीरो कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट है, बहुत कम कॉस्ट है, इसलिए वो सस्टेन कर रहा है और वो ईमानदारी अभी भी बरत रहा है, और खास करके कुछ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स जो हैं। अब हकीकत क्या है? अखिलेश यादव का काल जो इसके पहले का था, आप ताज्जुब करेंगे, उसमें 5% का जीडीपी ग्रोथ रेट एवरेज रहा है। लेकिन किसी ने नहीं जाना कि वहां कुछ विकास हुआ है, बल्कि लोगों ने उल्टा जाना, क्योंकि वो प्रोजेक्शन नहीं कर पाए, वो इस तरह के इश्तिहार नहीं दे पाते थे। अब शायद सीख रहे हो तो अलग बात है, लेकिन 5% का जो कि नेशनल एवरेज से आधा % ज्यादा था, ये था हकीकत। योगी के पहले, कोरोना छोड़ दीजिए आप, योगी के पहले के 4 साल में 16, 17, 18, 19, 20, आपको ताज्जुब होगा कि 2.9 पे ये ग्रोथ रेट आ गया है। इस बीच से कोरोना से पहले का, अगर कोरोना ले लेंगे तो 0.1% है ये ग्रोथ रेट, और कोरोना के बाद 21 को हम बेहतर मान ले तो भी 2.7% पड़ेगा। नेशनल एवरेज 4.6 का है। 5 राज्यों में। As Chidambaram writes, pro-change and no change, or no change. P. Chidambaram writes, and obviously this by-elections has sent a message to the BJP, and they're worried. And why we say that is this. Last week, little men and women walked into little booths and voted according to their preferences for change or no change in voting states. These were mainly by-elections to state assemblies, 30 in all. 3 Lok Sabha seats also elected new representatives. By and large, the ruling party of the state was the winner, but one exception was significant. In Himachal Pradesh, where the BJP rules and which is the home for president of the BJP, Nada, the Congress won the sole LS seat and all the 3 assembly seats. More significant was a gap in vote share. Congress 48.9, the BJP 28.05. Similarly, the Maharashtra, where the Congress won the sole seat, its vote share was 57.03% and BJP's 35.06, 20 points too big. In Rajasthan, the Congress won both seats and its vote share was 37.51 versus 18.8, another almost 20%. But in states where Congress lost to the BJP, the difference was narrow. In Karnataka, the 2 parties won 1 seat each, 51 versus 44, so the difference is only 7%. And in Madhya Pradesh, where the BJP won 2 seats and the Congress won, the difference was 47.58 to 45.45. That's only 2%, guys. In the 6 states where there was a straight fight between the Congress and the BJP based on the vote share, the Congress was the undoubted winner. Besides, overall, the BJP won 7 seats and the Congress won 8. There is a new wind behind the sails of the Congress, folks. So watch this space. It's going to be even Stevens, a good fight coming up. Jai Hind.